Hello everyone. In this video, we are going to have a discussion on the LGBTQ plus rights. Okay, so it is in news due to the various reasons. सबसे पहला जो है कि जो legal recognition मिलना चाहिए of the marriages with the same sex persons, वो चीज़ें नहीं मिली थी. इसके कारण इसके लिए जो केस था that is the सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ये हमें याद रखना है कि उसका जजमेंट था इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. ओके, जो केस था उससे जो रिजल्ट आया था उसके कारण ही पूरा जो सब्जेक्ट है वो न्यूज़ में है. सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द इन द सोशियोलॉजी वी नो फ्यू थिंग्स दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड सेक्स. Okay, gender and sex. So when it comes to sex, it is a biological thing, biological component of a person. When it comes to gender, it is more about the societal component. Okay, and when one understand is who is true alignment, okay, that is known as the gender. So we know about the two construct, that is gender and sex. So when it comes to the Supriya Chakravarti and Union of India case, na, in that case, Supreme Court refused to give the legal recognition to the marriage between the person of the same sex. That means the person of the same sex want to get married and get the legal recognition. Okay, and in what case, in what law they want to have a legal recognition under the Special Marriage Act. Okay, we all know about the Special Marriage Act, that it is more about the civil law. Okay, actually it is a civil law, but in the Special Marriage Act, na, it is different from the Hindu personal law or Muslim personal law. Why? Because Hindu personal law and Muslim personal law are more फेवर टुवर्ड्स द रिलीजियस फंक्शंस. ये रिलीजियस जिस तरीके से है ना उस तरीके से, बट स्पेशल मैरिज एक्ट टॉक अबाउट द इंडिविजुअलिटी, दैट इफ अ पर्सन इज हिंदू एंड ही इज मैरिंग टू द मुस्लिम गर्ल एंड दे डू नॉट वांट टू कन्वर्ट, कि मतलब कि जैसे मुस्लिम्स को वो कहना नहीं चाहता कि आप कन्वर्ट करके हिंदू बनो. सो इट इज पॉसिबल इन द स्पेशल मैरिज एक्ट, वेयर इज इन दिस एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें बोला सकता है कि आप धर्म चेंज कर सकते हैं. ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसएमए एंड अदर पर्सनल लॉज. तो ये इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और उसने ये बोला कि हम इसको फर्दर, मतलब जो है ना, कि आप क्या कर रहे हो कि इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन लेने की कोशिश कर रहे हो स्पेशल मैरिज एक्ट, बट इट इज नॉट पॉसिबल. और हम इस तरीके से नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन और हम इसमें ओवर रीच नहीं कर सकते. ओके, तो इसमें बात की गई थी कि जैसे विशाखा गाइडलाइंस आई थी उस तरीके से इसमें भी क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. तो इसमें दो केसेस है जो हमें याद रखना है. पहला केस है नवतेज जोहर केस एंड सेकंड है नालसा जजमेंट. तो जो नवतेज जोहर केस है उससे जो सेक्शन 377 था आईपीसी का वो हट गया था, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था. ओके, दैट इज द ये क्राइम है जो, ओके, दैट इज द मतलब कि इंटरसेक्स मैरिज, दीज आर द क्राइम. तो क्राइम से हटा दिया गया बट लीगल रिकॉग्निशन नहीं है. इसके बाद नालसा जजमेंट था 2014 का. इट रिकॉग्नाइज द नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी, कि नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज है एलजीबीटीक्यू, उसको रिकॉग्निशन दिया है कि यस इट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. ओके, सो दीज टू केसेस आर रिलेटेड विद नवतेज जोहर एंड नालसा जजमेंट. अब इसमें अगर हम बात करें कि कोर्ट के वर्डिक्ट क्या है और इशू क्या है, तो सबसे पहला जैसे राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन टू मैरी, तो इसमें ये मतलब कि बोला गया है दैट इट इज नो फंडामेंटल अनइक्वल राइट टू मैरी इन इंडिया. ओके, ट्रांसजेंडर पर्सन एग्जिस्ट इन द हेटेरोसेक्सुअल, दैट मींस दे कैन हैव द राइट टू मैरी अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ. एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर उनको राइट है. ओके, बट इट इज नॉट फंडामेंटल और राइट टू मैरी. ओके, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ओके, देन राइट टू एंटर अ सिविल यूनियन of a queer couple. So when it comes to queer couple, na, the court cannot prescribe the choice of civil union to the queer couple. Why? Because they said that we do not want to have a liberal interpretation of it. And civil union is a legal recognition by the same sex couple. Okay, and it is not in their jurisdiction. And if it is not in their jurisdiction, how can they do that? Okay, and third बात आई, that is a liberal interpretation of the SMA. तो कोर्ट डिक्लाइन दैट इट इज इनवैलिडेट. ओके, कि मतलब कि हम इसको काम को नहीं कर सकते. इट इज अबाउट द लेजिस्लेटिव फंक्शन व्हाट दे वांट राइट नाउ. देन एडॉप्शन राइट की बात की गई, तो एडॉप्शन में बोला गया था कि एलजीबीटीक्यू शुड हैव द एडॉप्शन राइट्स. सो इन दैट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द कारा, कि मतलब उन्होंने ये बोला कि नो इट इज नॉट, और striking down the rules may have the disastrous and the anomalous outcome that only legislature can put remedy. Okay, तो ये चीज कर गई है. तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मैरी की राइट है, एग्जिस्टिंग में है, राइट टू एंटर
सिविल यूनियन नो, सिविल यूनियन में नहीं है. इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएमएलए मतलब इंटरप्रिटेशन नॉट पॉसिबल, इट इज टू द लेजिस्लेटिव. एंड एडॉप्शन राइट, तो जो कारा ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था उसको अपहेल्ड किया है. कारा दैट इज अ सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. ये किसके अंतर्गत आती है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आता है ना 2015, उसके अंतर्गत आती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द एलजीबीटीक्यू राइट्स दैट इज इन द न्यूज. UPSC can ask the fundamental question or related to these acts in the exam. Okay, so this is all about the LGBTQ rights. I hope you like it. If you like it, kindly give me a thumbs up.